Hello, good morning. Welcome to Angrezi Medium. Let us discuss the idioms for today. The first one is you can't judge a book by its cover. This means that one should not prejudge the worth or value of something by its outward appearance only. किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान को आउटर अपीयरेंस देखकर जज नहीं करना चाहिए. For example, he may look very small and insignificant, but don't judge a book by its cover. He is a very powerful man in this area. वो दिखने में चाहे जैसा भी दिखे, लेकिन वो इस एरिया का सबसे पावरफुल आदमी है. Don't judge a book by its cover. Next one is a little learning is a dangerous thing. This expression emphasizes on the fact that a small amount of knowledge can mislead people into thinking that they are more expert than they really are, which can lead to mistakes. For example, he read about the medicine on the internet and without consulting the doctor he had it. Now the condition is worse, hence it is said a little knowledge is a dangerous thing. उसने बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए इंटरनेट पे देखकर दवाई खा ली. अब उसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब है. इसलिए कहते हैं दैट लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. नेक्स्ट इज अ स्नोबॉल इफेक्ट. A snowball effect is a situation in which something increases in size or importance at a faster rate. ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़े उसे हम क्या कहते हैं? Snowball effect. For example, publicity of the product will have a snowball effect on the sales. इस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने से सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे. It will have a snowball effect. Next is a snowball's chance in hell. This means that there is no chance at all. It is used in negative sentences to say that something is extremely unlikely or impossible. जब किसी काम के होने की उम्मीद बहुत कम होती है तब हम कहते हैं a snowball's chance in hell. For example, your proposal is too expensive. It has a snowball's chance in hell of being accepted. तुम्हारा प्रपोजल बहुत ही महंगा है इसलिए इसके एक्सेप्ट होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं. द लास्ट वन इज a stitch in time saves 9. A stitch in time saves 9 means that if you sort out a problem immediately, it may save extra work later. अगर किसी भी प्रॉब्लम को टाइम से सॉल्व कर लिया जाए तो बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. For example, it seems that something is wrong with my car. It's better to get it checked as a stitch in time saves 9. मुझे लगता है मेरी कार में कुछ खराबी है और मुझे चेक करवा लेना चाहिए टाइम से जिससे कि प्रॉब्लम बड़ी ना हो जाए. बिकॉज अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. Stay connected with us for more such videos. Do subscribe to our YouTube channel Angrezi Medium. Thank you.